निवर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति Information and informal procession. The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Draupadi Murmu, going past and through the Tirpal Hall. Under the shadow of Lord Buddha, 5th century BC Gupta period style. The dignitaries moving towards the dais for the national salute. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा राष्ट्र सल्यूट मध्याध्यात्म President Ramnath Kovind sitting in his vehicle, and accompanying him the President-elect Srimati Draupadi Murmu as they make their way towards Parliament House. राष्ट्रपति भवन से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। उनके साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक विशाल भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये काफिला अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, खास मौका। देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी
रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला, जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। The President's limousine is escorted by the President's bodyguard, proceeding to gate number 5 of Parliament House. In fact, the 6 Sikh will turn out guard at the southern side of the Jaipur column for departure. Commanding Officer Colonel S.K. Mohanty, personnel from the 3 services, and we showed you shots of this earlier, have lined up the path with arms on the route and will present arms as the dignitaries pass by. राष्ट्रपति भवन की भव्यता, प्रांगण दोनों ओर नहर और फव्वारे, और काफिला धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। विशाल लोहे का मुख्य द्वार जो विशेष अवसरों पर खोला जाता है, और आज ऐसा ही विशेष अवसर है जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से अब विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ, वहां से बाईं ओर संसद भवन है जो गंतव्य है इस काफिले का। It's a very poignant moment, reflective moment for President Ramnath Kovind, and of course a joyous and celebratory moment for Srimati Murmu, but also knowing that she has a task ahead and to serve the country to the best of her ability. The guard and personnel from the 3 services lining the path with the fundamental responsibility of maintaining the integrity of the Constitution of India. The President of the largest democracy in the world is vested with specific legislative and judicial and financial powers, among many others, to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld. And Indian democracy is the result of the great gift our founding fathers gave us. The gift of a constitution that, other than being the longest written constitution in the world, holds in its embrace the firmness to provide us solid and strong roots, and the liberalism to give us wings to grow, fly, and change. And as we await the swearing-in ceremony of India's 15th president to take place, Srimati Draupadi Murmu will soon hold with her the sacred responsibility of maintaining the integrity of this constitution as the new president of India. ये काफिला रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ, और दोनों ओर तीनों सेनाओं के पर्सनल पूरे मार्ग में। बहुत ही खास अवसर, देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बहुत ही खास अवसर जब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति इस पद की जिम्मेदारी अब से कुछ देर में ग्रहण करेंगी। There invariably is, as a form of mainstream dialogue, a recurring reference to the values a democratic nation rests on, and moving these values from paper to people is the true test of democratic governance. Srimati Murmu, as she will shortly take oath today,
will be wanting to ensure that she centers her tenure around these values and principles. The values and principles that she has always held dear, in sync with the form of governance she sits atop as its constitutional head. Principles of action that sustain society and democracy to be stable and successful at both the political and social levels. And it is because the scope of these often are justified and vehemently defended values is so far-reaching that they are debated and discussed at the public level. The President's limousine on its way to gate number 5. जन कल्याण की यात्रा सतत निरंतर चलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद शानदार दिन, जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये इसके हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी लोकतांत्रिक विरासत की ये खूबसूरत तस्वीर। संसद भवन के निकट पहुंचता हुआ ये काफिला कुछ ही देर में संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। The carcade making its entry to Parliament House. संसद भवन में दाखिल होता हुआ ये काफिला
So the carcade has arrived in the Parliament House. The outgoing President, Mr. Ramnath Kovind, along with the President-elect, Madam Draupadi Murmu, have now reached the venue, the Central Hall of Parliament, wherein, in just a few moments from now, Madam Draupadi Murmu will be sworn in as the 15th President of India. Only the second woman President of the country, the first tribal President, also the youngest President India has ever had. The President-elect being welcomed by Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. Along with him is Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramana, Lok Sabha Speaker Om Birla as well. Both the outgoing President and the President-elect being accorded the welcome outside the Central Hall of Parliament. That's the tradition, the discipline that, we see every 5 years when the outgoing President escorts the President-elect from the Rashtrapati Bhavan to the Parliament premises, wherein in the iconic Central Hall of Parliament, the President-elect takes oath of office. Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India in the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, Prime Minister Narendra Modi, members of the Union Cabinet, also the Chief Ministers of various states, state governors as well, and a host of other dignitaries in attendance inside the Central Hall of Parliament. Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramana, will administer the oath of office to Madam Draupadi Murmu, who will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India from the iconic Central Hall of Parliament. बिल्कुल अपने आप में ये ऐतिहासिक तस्वीरें कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला।